Good morning all of you. In the previous class, we have started the topic integers and we have completed exercise 1.1. Now today we are going to start 1.2. In 1.2, you have to do multiplication of integers. Multiplication of integers. Multiplication of integers is similar to the multiplication of normal numbers. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज सिमिलर टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर करना है, बस हमें साइन का ध्यान रखना है. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. 10 6 ज़ा 60, 60 1 ज़ा 60. आंसर विल बी 60 ओनली, प्लस 60. इन 10th क्वेश्चन, इन 10th पार्ट, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस विल बिकम अगेन प्लस. Answer will be in plus sign. 6 3 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36. Answer will be plus 36. Clear? You have to do the rest parts yourself. Now in second question, you have to find the value. You have to find the value. As we can see, 3276 is here and here also 3276. We take 3276 common. 3276 will be taken as common. Here only 3 is left. Minus sign, put minus sign here, and 3276 is taken common. Only 2 is left here. So 3 minus 2 it comes in the bracket. 3276. 3 minus 2 means 1. 3276 multiplied by 1. Answer will be 3276 itself. Clear? In fourth part, as you can see, 2 3 1 4 is common in both the equations. In both the equation 2 3 1 4 is common. We can write multiply by 1. We can write multiply by 1 here. Now 2 3 1 4 will be taken common. Here 2 3 1 4 is taken common. Only 9 is left. Put plus sign here. 2 3 1 4 is taken common here. Only 1 is left. Clear? 2 3 1 4, 9 plus 1 10. We have to multiply 2 3 1 4 with 10. Answer will be 2 3 1 4 0. Clear? Do the rest parts yourself. In third question, you have to verify. Verify means this left hand side should be equal to right hand side. Left hand side right hand side के equal prove होनी चाहिए. तो हम दोनों को solve करेंगे अलग अलग और जो उनका आंसर आएगा that will be similar. Clear? That is known as verify. So we are starting from left hand side. Minus 18 multiply minus 3 plus minus minus. Minus 3 and minus 5 will become minus 8. Minus 18 minus 3. Minus minus will become plus and 18 3s are 54 plus. Minus 18 and minus 5. Minus minus will become plus and 18 5s are 5 8s are 49. Clear? This will become minus minus plus 18 8s are 8 8s are 64 and 14. Clear? Minus minus will become plus. Now 50 and 90 will become 144. As we can see, left hand side is equal to right hand side, hence verified. Clear? Left hand side is equal to right hand side, it is verified. In fourth question, you have to find the multiplicative inverse. Multiplicative inverse means ulta. Inverse means ulta and multiplicative means you have to put multiply sign और जब हम इसको multiply करें इसके inverse से तब 1 आए. Clear? जब हम इसको इसके inverse से multiply करें तब 1 आए. तो multiplicative inverse of 6 will be 1 upon 6. Multiplicative inverse of 6 will be 1 upon 6. क्योंकि जब हम 6 की मल्टीप्लाई 1 by 6 से करते हैं तब क्या आता है 1. क्लियर?
In the same way, multiplicative inverse of -1/3 will be -3. Multiplicative inverse of -1/3 will be -3, क्योंकि जब हम 1/3 की मल्टीप्लाई -3 से करते हैं तो आंसर विल बी माइनस विल बिकम प्लस and 3 will cancel with 3, answer will be 1. Clear? Now let us move to the fifth question. In fifth question you have to determine the integer whose product with -1. ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसकी मल्टीप्लाई -1 से की जाए तो 23 आ जाए। ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसकी मल्टीप्लाई -1 से करें तो 23 आ जाए। तो 23 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -23 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आंसर विल बी 23। नाउ सेकेंड पार्ट, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसकी मल्टीप्लाई -1 से करें तो -47 आए। तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 47। 47 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -47 आएगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, कौन सा इंटीजर है जिसकी मल्टीप्लाई -1 से करें तो 0 आए। हमें पता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से की जाएगी तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से की जाएगी तो 0 आंसर आएगा। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ इन सिक्स्थ क्वेश्चन यू हैव टू डू ग्रुपिंग एंड देन इवेल्युएट। पहले आपको इसका ग्रुप बनाना है एंड देन यू हैव टू इवेल्युएट। ग्रुप बनाने में हमें ये ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ मिले। तो हम -5 का -60 के साथ ग्रुपिंग कर दें। माइनस विल बिकम प्लस एंड 5 6 30 एंड दिस 0। क्लियर? नाउ 2 zeros will come here and 19 3s are 57। क्लियर? हमें इसकी ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि मैक्सिमम ज़ीरोज़ आए। नाउ थर्ड पार्ट, 97 multiply by 25 multiply by 2 multiply by 4, 25 and -2, 25 and -2 will be grouped. Okay, then -4, then 97. 25 and -2 will become -50. Clear? Now -50 and -4 will be grouped. 97. Minus will become plus and 4 5s are 20. 97. Okay. 2 zeros will come here and 97 2s are 2 7s are 14. 1 18 19. 19400 will be the answer. Now in seventh question you have to verify. You have been given the values of A, B and C. Just simply put in these equations and verify means सबको equal prove करना है. By putting the values of A, B and C in these equation we have to prove all of these are equal. Clear? Value of B is -2, value of C is 1, value of A is 3. Clear? Value of A is 3, B is -2, C is 1, C is 1, A is 3 and B is -2. Clear? Now multiply. -2 ones are -2, -2 into 3 -6, 3 2s are 6, minus -6, 1 3s are 3 and 3 2s are 6. This is also -6. All these values are equal, hence verified. Hence verified. Clear? Now in 8th question you have been given that A asterisk B. इस साइन का मतलब है A मल्टीप्लाई बाय B माइनस A प्लस B. आपको सिंपली ये वाली इक्वेशन को इसकी तरह एक्सपेंड करना है। A की जगह -4 लिखना है, B की जगह -6 लिखना है। A की जगह -4 लिखना है, B की जगह -6, माइनस A की जगह -4, B की जगह -6. क्लियर?
Now simplify. Minus minus will become plus. 6 4s are 24. Minus 4 plus minus minus 6. Minus minus will become plus. Answer will be minus 10. 24 minus minus plus. Answer will be 34. Clear? Same we have to do it in third part. Write a equal to minus 13 and b equal to minus 6. A equal to minus 13 and b equal to minus 6. Minus minus will become plus. 13 6 are 78. Minus. Minus 13 plus minus minus 6. Clear? 78 minus 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 will become plus. 13 plus 6 19. 78 minus 19 sorry. 78 minus minus will become plus 19. This is plus. 9 and 8 17. 1 97. Clear? Do the whole exercise 1.2 in your notebook, and in further videos we will discuss exercise 1.3.